anger and despair at the last rites of 20-year-old Anjali, the victim in the horrific hit-and-run case in northwest Delhi's Kanjhawala. पांचों को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए बस। बेचारी वही कमाने खाने वाली थी, उसको तो याद करेंगे। पापा उसके है नहीं, 8 साल हो गई एक्सपायर हुए। वही 3-4 साल से अपनी मम्मी का अपना खर्चा, उसकी मम्मी डायलिसिस की पेशेंट है, दोनों किडनी खराब है, भाई हैं छोटे छोटे, उनके लिए कोई जरिया मिलना चाहिए, उसकी माँ के लिए भी कुछ मिलना चाहिए ताकि उनका गुजारा हो जाए। हमारी लड़की को इंसाफ मिले, उसके बच्चों को नौकरी भी मिले, उसको पैसा भी मिले जी कि उसका गुजारा हो जाए। और उन्होंने रेप कर दिया लड़की का और बोल रहे हैं कि ये एक्सीडेंट का केस है। The family is reluctant to accept the findings of the initial post-mortem report, which has ruled out the possibility of sexual assault. This after the victim's family alleged that the accused had raped the girl. The autopsy report, however, confirms that Anjali was dragged and that injuries on her head and spine were a result of blunt force impact of a vehicular accident, and suggests that she suffered a hemorrhage which is likely to have caused her death. प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से हुई है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज उसका मेन कारण है। पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी हमें मिलेगी ड्यू कोर्स में, और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। On the night of the accident, the victim was not alone on her scooty, shows this CCTV footage. When she was hit by the car of the accused, Anjali was with her friend Nidhi, now an eyewitness in the case. As per the police, the accident took place while Anjali was on her way to drop her friend home. Just minutes before the accident, they are seen arguing outside this hotel in West Delhi, where they purportedly came to celebrate New Year's Eve. पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आई विटनेस को ट्रेस किया है और उसकी को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाया है, और 164 के बयान उसके दर्ज कराए गए हैं। जो 164 के बयान हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। In her statement to the police, she said that she remained silent because she got scared after the accident, adding that it was the fault of the car's driver. The accused in turn told the police that the accident took place because of the victim's negligence. The incident has also raised larger questions on the lapses that could have taken place on the part of the Delhi police that night. Is it a wake-up call for our government to strengthen our police system, right from ramping up PCR vans to fixing accountability? For now, a young girl has lost her life. All of 20, she's lost her dreams. She was the sole breadwinner of a family of 4. In New Delhi with camera person Prem Singh and Pooja Arya, Vedant for NDTV.